Now hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 18th March 2023. So over here कुछ news है, हम environment से related cover करेंगे. Along with that कुछ policy news है. You can see over here PM MITRA scheme. So we are going to discuss about this scheme in detail today because it is important from our exam point of view. And second thing is that textile sector itself is very important for India. We will see the contribution of textile sector also and the scheme. So along with that we will take the other news, especially International Criminal Court. As you can see over here that the International Criminal Court, that is ICC, it has issued arrest warrant against Putin and one more person. Now along with that we will also see the Chinese initiative in resolving the Russian-Ukraine crisis after they have mediated the relationship between starting of the diplomatic relationship between Saudi Arabia and Iran. So let's start with the news. The first news is that let's take this very important news and very interesting news. Tiger helps uncover timber depots in Arunachal Reserve. So we are not talking about the नामदफा टाइगर रिजर्व. इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं अभी, ठीक है. तो उसमें से एक है नामदफा, ठीक है. ये जो कभी कभी हमें मैच द कॉलम आता है या कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है. तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंसिडेंट हो रहा था. वो इंसिडेंट क्या था कि देखिए किसी भी नेशनल पार्क में या जैसे यहाँ पे है ना नेशनल नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, तो उनका एक कोर एरिया होता है, ठीक है. जैसे कि दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम लाइक बायोस्फीयर रिजर्व. जैसे कि आप देखेंगे तो एक कोर एरिया होता है. कोर एरिया शुड नॉट बी टच्ड, ठीक है. और ये उसके बाद फिर यू हैव कंटिन्यूअस जोन, ओके, एंड अदर थिंग्स like you have after core you have buffer zone and then you have the third zone where there can be human settlements etc. तो ये जो कोर एरिया होता है यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा था कि कुछ टाइगर्स जो हैं वो कोर एरिया में नहीं मिल रहे हैं, वो कोर एरिया से बाहर आ रहे हैं, ठीक है. तो जब इसका रीज़न फाइंड आउट करना स्टार्ट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे पता चला कि नामदफा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में देयर आर टिम्बर डिपोट्स. टिम्बर डिपोट्स मतलब कि कोर एरिया में पेड़ काटे जा रहे हैं. सो यू विल सी दैट अ टाइगर स्पॉटेड आफ्टर एन 8-year गैप कुड हैव हेल्प्ड अनकवर टिम्बर डिपोट्स डीप इनसाइड इंडियाज easternmost tiger reserve. So on March 14, officials in Arunachal Pradesh Changlang district found several illegal timber depots in the core area of 1985 square kilometer Namdapha National Park and Tiger Reserve. So accidentally park officials they bumped into these illegal logging activities, okay, while trying to find out that why a tiger came out of the core area of the reserve after so many years, ठीक है. This is one of the reasons. Now coming to the important news, that is Maharashtra UP among 7 states to get textile parks. Now textile sector जो है it is a very important sector for India. अगर आप देखेंगे कि इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सेक्टर हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. सो टेक्सटाइल सेक्टर का ये इम्पोर्टेंस है इंडिया में. नाउ इफ यू विल सी इन एक्सपोर्ट, सो इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का इट इज सेकेंड नंबर, ठीक है. सो फर्स्ट नंबर पे कौन है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड. एंड अगर हम ओवरऑल फैब्रिक की बात करें तो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट. अच्छा, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क ऑल्सो, ओके. नाउ देयर इज अ प्रोग्राम to establish textile parks that is called as PM MITRA scheme. That is it was announced in October 2021. तो इसका देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए, PM MITRA scheme का PM MITRA scheme. So it is PM Mega Integrated Textile Regions and Apparel Scheme. Okay, it was announced on October 2021 and the parks will be set up by 2026-27. Okay, so center has selected sites in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to set up new textile parks. तो यहाँ पे जो एम है 7 स्टेट्स में, ठीक है ना, that the total outlay for the project is rupees 4,445 crore
Okay, and the budget allocation for this year is 200 crore. And then it will boost the textile sector in line with 5F. Now what is this 5F? It is farm to fiber to factory to fashion to foreign. इसका मतलब we are going to produce for India and for world also. So here the government's objective is make in India and make for the world. अब गवर्नमेंट जो टोटल आउटले करने वाली है वो कितना है, ₹4445 करोड़, जिसमें से इस बजट में अनाउंस हुआ है 200 करोड़. बट द गवर्नमेंट एम्स that the total investment in the park will be ₹70,000 crore and it will create employment of about 20 lakh people. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पार्क्स हैं, it will be integrated textile values. Okay, integrated park. Integrated का मतलब कि जितने भी काम रिलेटेड हैं टेक्सटाइल से, like spinning, weaving, processing, dyeing and printing and manufacturing, all will be done at one location. That's why we call it as an integrated textile park. Fine. तो अगर हम ये जो हम क्लस्टर अप्रोच जो अडॉप्ट करते हैं कि एक ही जगह पे सारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ओके, सो इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट विल मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एज वेल एज वेस्टेज जो होता है वो सब काफ़ी कम हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस क्लस्टर अप्रोच. नाउ कमिंग टू दिस स्कीम अगेन, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर विल बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल विच विल बी ओन्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट for each park to oversee the implementation of the project. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है it will provide ₹500 crore per park for SPV. ओके, अब इसमें से अगर आप देखेंगे कंपोनेंट, so there is competitive incentive support of ₹300 crore per park to incentivize speedy implementation. Okay, now coming to a news from science and technology. That is Indian Institute of Astrophysics researchers develop low cost star sensor. So researchers at Indian Institute of Astrophysics, they have developed a low cost star sensor for astronomy and small CubeSat class satellite mission. अब आप समझिए कि ये होता क्या है. समझ लीजिए कि सपोज यू आर इन द स्पेस, सो हाउ विल यू फाइंड आउट द डायरेक्शन. सो स्टार्स जो होते हैं उनका पोजीशन जो है वो रिलेटिवली फिक्स्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स. So based on the position of the star, you can find the orientation in space. So we will see that these star sensors, they will help satellite to make a proper orientation. So if we will see that any satellite, they need to know where it is pointed in the space, and the instrument used for this purpose is called as star sensor. ठीक है, so if you will see the position of stars in the sky is fixed relative to each other and it can be used as a stable reference frame to calculate the orientation of a satellite in orbit. ओके, सो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इन्होंने एक स्टार सेंसर बनाया है जिसका नाम है Starberry-Sense. सो इट विल हेल्प स्मॉल क्यूबसैट क्लास ऑफ सैटेलाइट्स टू फाइंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस, और जो उसका कॉस्ट होगा वो 10% लेस होगा जो अदर सेंसर्स अवेलेबल हैं मार्केट में. द नेक्स्ट इज 4999 यूट्यूब लिंक्स ब्लॉक सेज IT मिनिस्ट्री. तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000, so it provides for government to issue instructions for blocking of a website, and then there is one rule that is called as information technology procedure and safeguards for blocking of access of information for public rules 2009, under which this blocking of the websites has been done. So if you will see that the Union government has so far blocked 4999 YouTube links so far. Okay, so it has been done under section 69A of the Information Technology Act 2000. The next is India to host African Chiefs Conclave Field Training Exercise. तो it is a, first of all इसके बारे में मैं कुछ information दे देता हूँ. It is a biennial exercise. साल में 2 बार होता, 2 साल में 1 बार होता है, ठीक. और लास्ट टाइम ये हुआ था औंध में, ONDH औंध में. अब इस बार भी ये औंध में होने वाला है. तो यहाँ पे जो है दैट इंडियन आर्मी जो है इट इज सेट टू होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फ्रॉम March 21 to 30 एंड अफ्रीकन चीफ्स कॉन्क्लेव ऑन March 28 in Pune. Okay, so here the objective is to build upon the initiative taken to strengthen India-Africa relations and creating opportunities to exchange ideas. The next is Supreme Court seeks government reply to minors' petition on saving the Western Ghats. तो यहाँ पे एक माइनर है, उन्होंने एक फाइल किया है पेटिशन फॉर सीकिंग जुडिशियल इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में आप देख सकते हो. तो वेस्टर्न घाट का अगर आप देखोगे
So if you will see the peninsular India, so you have Western Ghats starting from Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. एंड इफ यू कंपेयर इट विद ईस्टर्न घाट्स तो आप देखोगे कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत जगह ब्रेक है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, बट वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस विच कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जितने भी मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के, लाइक यू हैव गोदावरी, यू हैव कृष्णा, यू हैव कावेरी. ठीक है, सो हियर यू हैव गोदावरी, उसके साउथ में कृष्णा, then Kaveri, so they all have their origin in Western Ghats. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे that it is recognized in the Man and Biosphere Reserve program and it is one of the Biosphere Reserve of India. ठीक है, ये Western Ghats, it is one of the Biosphere Reserve of India. ठीक है, and there are many prominent national parks located in Western Ghats. For example, if you will see Western Ghats में if you will see Nilgiri Biosphere Reserve. ठीक है, if you will see Nilgiri Biosphere Reserve, so it is located in Western Ghats only. Okay, so now there is a petition to save the Western Ghats. So there has been various panels also of the government where they have suggested that how to protect the ecology of Western Ghats. So one of that panel is Madhav Gadgil Committee. So Madhav Gadgil Committee on ecology of on protection of ecology of Western Ghats, that is called as Madhav Gadgil Committee, where they have created various no-go areas etc. to protect the ecology of Western Ghats. Second question जो Western Ghats से कभी कभी आ जाता है, that is where the Western Ghats and Eastern Ghats meet. So Western Ghats and Eastern Ghats they meet in Nilgiri Biosphere Reserve. Okay, this is the junction of Western Ghats and Eastern Ghats, Nilgiri Biosphere Reserve. Okay, then कभी भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, AILET में भी आया है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन 3 स्टेट्स में फैला हुआ है. So if you will see the Nilgiri Biosphere Reserve, it is spread in 3 states, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. These are the 3 states where the Nilgiri Biosphere is spread. Now coming to a movie, Mrs. Chatterjee versus Norway turns the spotlight on state of custody cases abroad. So यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मूवी आ रहा है Mrs. Chatterjee versus Norway, which focuses on the diplomatic row between India and Norway in 2011, putting the spotlight on other such current cases, including one involving an infant in Germany. तो यहाँ पे we are discussing about the child custody cases in the Western countries. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्टोरी है, it involves the confiscation of 2 young children from an Indian couple in Norway by authorities over charges that the parents Abhiroop and Sagarika Chatterjee were unfit to look after them. उसके बाद इंडिया रेज्ड several diplomatic protests and the children were returned to India and placed with other family members in 2012. अब देखिए ये मूवी जो रिलीज हो रहा है तो इसमें जो नॉर्वेजियन एम्बेसी है, दे हैव रेफ्यूटेड द चार्जेस व्हिच हैज बीन पुट ऑन देम. ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे जो पेरेंट हैं सगारिका चटर्जी, जे सिंग दैट फिल्म कैन शो जस्ट 20% ऑफ द ट्रॉमा व्हिच वी हैड टू एंड्योर. ओके, who has now reverted to her maiden name of Chakraborty etc. So she says that, so अब Norwegian embassy जो है, they are saying that the children were not removed from their parents' custody due to cultural differences, and the government was bound by privacy laws from giving specific details of the case. तो नॉर्वे में क्या कहा गया कि we value and respect different family systems and cultural practices also when they are different to what we are accustomed to, apart from corporal punishment in upbringing. So there is zero tolerance for violence in any shape or form. अब देखिए यहाँ पे एक और भी केस है, Baby Ariha Shah, who was the 2-year-old daughter of a couple from Ahmedabad who was taken into child care custody by German authorities in September 2021. The charges were that she had been abused at home, a charge her parents Bhavesh and Dhara Shah denied. Now next comes Rajasthan government plans mainstreaming of millets in program. तो यहाँ पे जो हमें याद करना है वो ये है कि millets, okay, they are very nutritious and they can be one strategy to eliminate hidden hunger, okay, or micro hunger from Indian population. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि the Rajasthan government has planned to mainstream millets in the public funded programs with the convergence of several departments. तो यहाँ पे देखेंगे the state ranks at forefront of millet cultivation in India, producing about 41% of the country's yield.
Now, what is the significance of this program? So, if you will see that the year 2023, it has been declared as the International Year of Millets. And see, India is also the largest producer of millets in the world. So 2023 has been declared as the International Year of Millets by the United Nations General Assembly, and in that the state is promoting the use of millets in food. Now उसी के चलते अगर आप देखेंगे 2-day Rajasthan Millet Conclave was held at the earlier for research on millets. The next is from environment. Horseshoe crabs disappearing off Odisha's coast. Scientists are worried. So if you will see over here that horseshoe crabs, one of the oldest living creatures of the earth and medicinally priceless, appearing to be disappearing from their familiar spawning grounds along Chandipur and Balamagri coast of Odisha's Balasore district. So scientists have urged the Odisha government to come up with the protection mechanism before the living fossil becomes extinct due to डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस. जैसे फिशिंग नेट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें ये फंस जाते हैं, ठीक है, और फिर इनका डेथ हो जाता है. राम साहेब प्रसाद यादव इलेक्टेड एज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. So this is important. Ram Sahib Prasad Yadav was elected as Nepal's vice president on Friday, and he has comfortably defeated Ashta Lakshmi Sakya of CPM UML to become Nepal's third vice president and the first from the Madhesh region. The next is International Criminal Court issues arrest warrant against Putin over Ukraine. So International Criminal Court, which is in Hague, and it carries out investigations and trials of individuals for committing 4 types of crimes. That is war crimes, crime against humanity, then you have genocide. So these are the crimes which are investigated, which are tried by the International Criminal Court, like crime against humanity, war crimes, genocide. So these are the वेरियस जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अगर आप देखेंगे, सो रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बट स्टिल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज issued a warrant against Vladimir Putin for unlawful deportation of Ukrainian children and Maria Lvova-Belova, who is Russia's presidential commissioner for children's rights. So यहाँ पर आप देखेंगे that ICC prosecutor Karim Khan launched an investigation into alleged war crimes and crime against humanity in Ukraine, and Mr. Khan said that after a visit to Ukraine that the alleged abductions of children are being investigated by my office as a priority. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है that President Vladimir Putin was legally void since Moscow does not recognize the court's jurisdiction. So Kremlin has said that ICC's decision to issue an arrest warrant for Putin was legally void, because Russia is not a member of International Criminal Court. Now coming to Russia-Ukraine crisis, Xi Jinping to push Ukraine peace plan on Russia visit. So earlier we saw that the new foreign minister of China, they had talked with Ukraine. Now Xi Jinping is going to push Ukraine peace plan on Russia visit. So this is going to come close after China mediated the normalization of ties between Saudi Arabia and Iran. Now the next is India's startups hold about $1 billion in SVP. So यहाँ पे जो डेटा आया है from Minister of State for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrasekhar, so they are saying that about $1 billion in funds of Indian startups have been impacted by the collapse of California-based Silicon Valley Bank. और इसमें से जो $1 billion में से $200 million has been moved to bank accounts in Gift City. तो गिफ्ट सिटी में जितने भी इंडियन बैंक जो ऑपरेट करते हैं, दे डू नॉट ऑपरेट इन इंडियन रुपीज, दे ऑपरेट इन फॉरेन रुपीज. सो हियर द जो उनका वहाँ पे जो अकाउंट है, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बैंक्स इन द गिफ्ट सिटी. Now earlier the US Treasury Department, Federal Reserve and Federal Deposit Insurance Corporation have assured the depositors that they will get their money back. Now related to the contagion effect, so we already know that 3 banks were in news. एक तो Silicon Valley Bank जो हमने अभी किया, एक Signature Bank US का, ठीक है, और एक Credit Suisse, ठीक है, which is Switzerland's bank. ये 3 बैंक जो हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं रिलेटेड टू दी रिसेंट ग्लोबल क्राइसिस इन फाइनेंशियल सेक्टर गोइंग ऑन. तो SVB का हमने देखा था दैट इज अ मेन अकाउंट फॉर टेक स्टार्टअप्स एक्सेट्रा.
or signature, the people who are lending in cryptocurrencies, for them it is a main bank, fine. And Credit Suisse, it has got a bailout package from the Central Bank of Switzerland, फाइन. सो यहाँ पे एक जो टर्म आजकल चल रहा है न्यूज़ में वो है कॉन्टेजियन, ठीक है ना. कॉन्टेजियन का मतलब होता है द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक इवेंट हैपनिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, फाइन. तो यहाँ पे जो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वंस अगेन ही इज सेइंग दैट द यूएस बैंक इश्यूज वंस अगेन हाईलाइट द नीड फॉर प्रूडेंट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है. सो ही इज सेइंग दैट there is the importance of ensuring prudent asset liability management and robust risk management in the sector in order to preserve financial stability in the economy. So banks must undertake periodic stress tests, build up critical buffers for any unanticipated future stress. Then stress arising out of interest rate risk need to be properly assessed. तो क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप एसवीबी को देखोगे, सिलिकॉन वैली बैंक, इसका जो फेलियर है इट इज लिंक टू द राइजिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय द फेडरल रिजर्व इन यूएसए व्हिच हैज इरोडेड इट्स value of bonds which it had earlier bought. So that's all for today friends. We will meet next week. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.